Hi everyone, I'm Yashaswini and welcome back to my YouTube channel. आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ अपने सारे ब्लशेस के बारे में क्योंकि मेरे पास बहुत सारे हैं. यू विल सी बाय द एंड ऑफ द वीडियो. एंड मेरे पास हर टाइप के ब्लश हैं, ठीक है, क्रीम बेस्ड, लिक्विड बेस्ड, पाउडर बेस्ड, एवरीथिंग. क्योंकि मैं ब्लशेस को बहुत ही मल्टीपल पर्पस के लिए यूज़ करती हूँ, नॉट जस्ट फॉर द ब्लश बट आई ऑल्सो यूज़ इट फॉर माई लिप्स एंड माई आईज एज वेल. मैं जितना आई शेडोज यूज़ नहीं करती उतना मैं ब्लशेस को ही यूज़ कर लेती हूँ. तो फर्स्टली ब्लशेस को मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है: पाउडर बेस्ड, क्रीम बेस्ड एंड लिक्विड बेस्ड ब्लशेस. I will quickly start with all the blushes that I own, which are a lot. So please wait for the end and I will tell you one blush that is my favorite. Starting off with the powder based blushes. 3 powder based blushes हैं. पहले मैं अपने सबसे पुराने ब्लश के बारे में बात करूंगी जिसकी सारी लेबलिंग मिट चुकी है, बट दिस इज बाय स्विस ब्यूटी प्रो ब्लश एंड हाईलाइट. इट इज ब्रोकन, लाइक शीशा अलग हो गया उसका, बट द रेस्ट इज सिक्योर्ड क्योंकि ये ट्रैवल के टाइम पे कभी ना कभी मुझसे टूट गया था. ये सारे शेड्स हैं जो मैं ऑल्सो आई यूज इट फॉर माई आई शेडोज एंड मतलब मेरा मन नहीं कर रहा है इस ब्लश पैलेट को फेंकने का, विच आई प्रोबेबली शुड, क्योंकि ये मेरा पहला ब्लश पैलेट था और अब मैं इसे यूज भी नहीं करती हूँ. बट मेरा मतलब ऐसे मेमोरी जुड़ी हुई है इससे. दिस इज माई फर्स्ट एवर मेकअप प्रोडक्ट आई बॉट and this is for 400 rupees, which is a very good amount for Swiss Beauty. It's a good brand and obviously a lot of colors are being offered. So if you are a beginner and you don't know what blush you should buy, this is a palette you can definitely invest in. आपके eyeshadow का भी काम करेगा and आपके blush का भी काम करेगा. I have this cutesy mini Wet n Wild Pinch Me Pink blush. ये मैं ऑनेस्टली बहुत कम यूज करती हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा ग्लिटरी फॉर्म आता है बहुत अप क्लोज देखने से, एंड जब मैं इसे फेस पे लगाती हूँ तो वो ग्लिटर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है. एंड मेरी स्किन ऑलरेडी बहुत ऑयली है, बहुत चमकता है सब कुछ, तो आई अवॉइड ग्लिटर्स एंड हाईलाइटर्स और एनीथिंग. So this has a very rosy pink shade, but the pigment is not that great. This was for not even that expensive. Okay, it's not written here. Okay, I'm not sure kitne ka hai, but you can definitely find it on Amazon. The shade is Pinch Me Pink. Next up in powder category, I have this amazing palette from Leon Beauty. This was given to me by the brand. मैंने ये नहीं खरीदा है खुद से. But when I was given the choice ki what all products I can get, I chose this because obviously just look at this. Just look at this. I mean, thanks to Leon Beauty, मेरे पास दुनिया भर में जितने शेड्स हैं अब सारे हैं, ठीक है. आई कैन गेट रिड ऑफ ऑल द पैलेट्स एंड जस्ट कीप दिस वन. इसमें अगेन आई यूज एवरीथिंग फॉर माई आई शेडोज एज वेल. Lighter to darker, every shade is there. Next category is my cream based blushes, which are a lot. So I will first wrap that up and then I will show you my liquid based blushes, which are my favorite. And at the end, obviously, I'll tell you which one is my favorite and I wear it almost every day. Okay, so ये सारा palette मेरे cream based blushes का है. And I have 3 blushes which are in the stick form. बाकी सारे ऐसे छोटे छोटे boxes के form में होते हैं. I prefer the packaging which is in the box form because it's very easy and convenient to carry that around. Firstly, my most expensive blush ever. I don't remember because my brain has probably blocked the memory defense mechanism. ये थोड़ा सा कोरल शेड है. दिस इज फ्रॉम DM Beauty and I got this from Nykaa. This is a bit of a coral form which suits my skin type, which is the fair to medium skin type. And it looks a bit weird on the lips and the eyes, but on the cheek it's fine if I top it off with other blushes as well. अगर मैं इसे अकेली लगाऊंगी तो मेरा अलग से ऐसे ब्लश मतलब दिखता है, तो मैं इसको यूजुअली मिक्स करके लगा लेती हूँ. इसका थोड़ा सा ऐसे ऑरेंजिश सा टोन है and I mostly wear it when I'm wearing either whites or blacks, so it's not too much on my face. Next up, I have 2 cute blushes from Dream Beauty. This is their Nebula Cream Blush range, and the shade names are Karina Crimson and this is Lagoon Pink. First, I will show you Lagoon Pink क्योंकि
वो मैं काफ़ी यूज़ करती हूँ। दिस इज़ अ वेरी क्यूट रोज़ पिंक कलर एंड मतलब इसको लगाने के बाद सच में ऐसा लगता है कि आपकी स्किन बहुत अंदर से हेल्दी है और थोड़ा-सा ऐसे सन की वज़ह से टैन हो रखा है बट वेरी क्यूट। सो दिस वन आई यूज़ फॉर माय सॉफ्ट गर्ल मेकअप लुक। इसको मैं आईज़ पे भी लगा लेती हूँ, लिप्स पे भी एंड देन आई पुट द ग्लॉस एज़ वेल। सो दिस इज़ अ वेरी गुड मल्टी यूज़ प्रोडक्ट। Then next I have Karina Crimson. This is a red blush. Believe it or not, but मैं red blushes बहुत बहुत यूज करती हूँ क्योंकि I don't know, there's just something very romantic about red blushes. So this is a literal red blush. It looks brown on camera, but it's not. It's red. And इसका pigment काफी ज्यादा है, तो बिल्कुल थोड़ा सा लगाने से पूरे दिन you will be blushed. Next, I have three blushes from Inside Cosmetics. And this is a very affordable brand, which I'm not even sure आप लोगों को पता है या नहीं. But if you find a brand which is very affordable and selling makeup affordable budget में, then I definitely want to try it out. This is the shade, the brown color shade is Irish Cream. ये मैं मोस्टली यूज करती हूँ अपने eyelids के लिए एंड देन आई टॉप इट ऑफ विद माई eyeliner and everything. And this I do not use for my cheek mostly. कभी कभार की बात अलग है एंड मैं कॉन्टोर वगैरह भी नहीं करती हूँ अपने फेस पे, तो ये मोस्टली मेरे आईलिड्स के लिए यूज होता है. इसी की रेंज का दूसरा शेड इज दिस पिंक वन. दिस इज कॉल्ड स्ट्रॉबेरी समर 05. इट इज अ वेरी ब्यूटिफुल पिंक. इट लुक्स अ लिटिल बिट डार्कर बट इट्स नॉट. जब आप इसे अप्लाई करते हो तो इट गिव्स यू वेरी सॉफ्ट गर्ल लुक and इसका pigment भी काफी अच्छा है, so you can use it on your lip as well and then you can top it off with your lip gloss. Next, from Inside Cosmetics, I have this orange blush, which was a honestly very bold move from my side. This is their shade 01 Soft Salmon. ये मैं बहुत rarely use करती हूँ because look at the coral shade. मैं इसको eyelids पे यूज कर लेती हूँ या फिर एज अ बेस ऑफ माई लिपस्टिक, या कभी कभी आई मिक्स इट विद द ब्राउन वाला ब्लश एज वेल एंड इट गिव्स अ वेरी क्यूट, मतलब ऐसे बीच काइंड ऑफ अ लुक. Next up, I have from Swiss Beauty this very tiny blush cream tint. This The shade is called Cinnamon. This is again a brown blush. I'm not even sure why I have so many brown blushes, but I do for some reason. मैं इसको lips, eyes, cheek के bones के लिए everything I use it for. And then again I mix it with the very lightest of the pink tints that I have, and then I mix and match everything. Now this one is called Berry. This is Viva the Seno, and I got this from Amazon. ये बहुत पुराना हो चुका है और ये टूट भी गया है, but again it is a red blush and it is very very close to my heart. I have used this a lot in 2 years of my college, and this was just one cream blush that I used to have, ठीक है, powder blush के अलावा. And that's why इसकी condition थोड़ी खराब हो गई है, but it is still very much workable. And even if I put this on today, it would look like my skin is breathing from inside. Next up, I have this Mousse blush by New York Bay, and this is in the shade, okay, Rosewood Romance. So this is a mousse blush and this is very much like very softy sa, and this is a peachy shade. So it's not too coral and it's not too pink, but it's a very good peach shade, and I rarely use it, but when I do I feel like कि मैं क्यों नहीं कर रही थी इतने दिनों से इसे use, because it gives a very natural color. बट द ओनली डाउन साइड टू दिस इज कि ये बहुत जल्दी उतर जाता है, ये लॉन्ग लास्टिंग सा नहीं है मतलब, सो मैं इसको बहुत कम यूज करती हूँ. Now moving on to my liquid blush category, which is the last but not the least. In my liquid blush category, I have the two superheroes. One is from Earth Rhythm. This is in the shade, not sure, it's not written here. It's kind of a coral color. I have a lot of browns and corals. Okay, so this is a bit of a coral color, and when you apply it, it looks pinky. Very, very, okay, I don't know what shade it is, but
it looks very Barbie pink color, and it's not this orange color. This also looks very good on your lip as well and your eyes as well. So you can top it off with your lip gloss and it will look like you have a very natural lip color, which is this. Next, I have this Water Fix tint, and I got this from Amazon. This is a very dark shade and it's very difficult to apply, but इसको आप apply कर सकते हो. Like you can take that palette and उस पे थोड़ा सा इसे लगा के then you take your makeup sponge or your brush and then apply on your cheek. इसका pigment काफी strong है, मतलब एक छोटा सा drop भी will tint your entire face. So use it very wisely and do not overuse it because you will look like a monkey. And I have suffered that. Okay, lastly, as I told you, I will tell you my favorite blush of all time and the one that I have been using every day for the past few months. And this, the winner of the entire blush series, is this one. This is by Earth Rhythm. It looks like a very dark shade, but it's not. It's good pigment, but it's not too difficult to blend. And this is in the shade something with cherry or something. Okay, I don't remember the name, but this is a very good color. It makes your skin naturally look like it's blushing, and it does not look too much on your face. It does not look like आपने जबरदस्ती कुछ लगाया है. But yes, be very careful with the pigment. Apply little bit in the beginning and then blend with your hands. I feel like हाथ से ऐसे ऐसे blend करने से the extra product gets removed itself, and the only required much is on your face. So this is the winner of the series and my lovey-dovey. Okay, so that's it for my blush series. I hope you like it, and if you do shower your love, like, share and subscribe to my channel, and I will see you in my next